क्या कहेंगे, आपने विजिट भी किया हुआ है? First thing, we came to Gujarat, but looking at the people shouting and cheering, it looks like we are still in Andhra or Telangana. But it feels so good because the love for the film is like exactly throughout the country. About coming to the Statue of Unity, we came here. The first thing we do is when you come to this place, you lift your head and look up. Sir उठा के देखना है. So ऐसा ही जीना है. Sir उठा के जीना है. So that's what I think. That's the intention behind building the statue. We should remember the virtues and the values that Sardarji has stood for. We should remember the unity of the country. And in a small way, I think, very, very small way, I think that is what RRR does, what the RRR does, unifying the country when they come to watch the film. It is not a Telugu film, it's not a Hindi film, it's not a Tamil film, it's an Indian. ये हमारा देश है, ये हमारा गर्व है कि वल्लभ भाई पटेल जैसे आयरन मैन have united this country and given us a freedom to live and pass on our virtues. तो आरआरआर भी हमारे जीवन में यही मानी रखता है कि जो कैरेक्टर्स जो किरदार हम निभा रहे हैं, आलूरी सीताराम राजू जी का और कुमरम भीम का, ये लोग भी ऐसे ही लोग थे कि सर उठाने के लिए अपना जीवन को भी बलिदान दे दिया ये देश के लिए. तो बहुत गर्व कारण है कि हम लोग वो पात्र के लिए हमें चुना है हमारे निर्देशक राजमौली जी ने. We are very lucky to be a part of RRR, and we are very lucky to be a part of India. गुजरात from इंडिया को इतना प्यारे लोग हैं, इतना प्यार मिल रहा है, सिर्फ साउथ में नहीं पूरे देश में मिल रहा है. ये सिर्फ एक ही कारण है, RRR की वजह से मिल रहा है. और it's a proud moment for all of us to be here. We feel that effort, we feel that energy of Sardar Vallabhbhai Patel ji, and we recognize that iron man जो दिख रहा है, सर उठा के जीना है, वो बताता है हमको. एंड ऐसी हर कोने में जो सिनेमा लवर्स है, आप सब लोग सर उठा के आके हमारा मूवी भी देख लीजिए. ऐसी सेम फीलिंग आता है. इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग. वी लव गुजराती पीपल. इनका खाना भी बहुत पसंद है. हमारे बहुत गुजराती फ्रेंड्स है इधर अहमदाबाद और बड़ौदा में से. सो थैंक यू ऑल and keep blessing our films, and we will always come back with lots of love.